क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य डिनास्टी? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 2, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन व्हिच ईयर? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1921। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया? भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 4, द बैटल ऑफ पलासी वाज फॉट इन व्हिच ईयर? पलासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 1757। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर? गुप्ता साम्राज्य का संस्थापक कौन था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, चंद्रगुप्ता 1। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, चंद्रगुप्ता। क्वेश्चन नंबर 7, द स्लोगन डू और डाई इज एसोसिएटेड विथ व्हिच मूवमेंट? करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया? स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 9, द जालियनवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन व्हिच ईयर? जालियनवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1990। क्वेश्चन नंबर 10, द कलिंगा वॉर वाज फॉट इन व्हिच ईयर? कलिंगा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 261 BCE। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच इंडियन रूलर फॉट अगेंस्ट अलेक्जेंडर द ग्रेट? किस भारतीय शासक ने सिकंदर महान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, किंग पोरस। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच डिनास्टी डिड किंग अशोका बिलोंग टू? राजा अशोक किस वंश से संबंधित थे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मौर्य। क्वेश्चन नंबर 13, द बैटल ऑफ हल्दीघाटी वाज फॉट बिटवीन अकबर एंड व्हिच राजपूत रूलर? हल्दीघाटी का युद्ध अकबर और किस राजपूत शासक के बीच लड़ा गया था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, महाराणा प्रताप। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू कॉन्क्वर दिल्ली? दिल्ली पर विजय पाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मोहम्मद गौरी। क्वेश्चन नंबर 15, हु फाउंडेड द ब्राह्मण समाज इन 1828? 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राजा राम मोहन रॉय। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द विक्टोरी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वाइसरॉय कौन था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथ-खो। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ डीएचसी इन इंडिया? इस अधिनियम ने भारत में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच इंडियन किंग एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म आफ्टर द कलिंगा वॉर? कलिंगा युद्ध के बाद किस भारतीय राजा ने बुद्ध धर्म अपना लिया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अशोका। क्वेश्चन नंबर 19, द सोलर डिनेस्टी वाज फेमस फॉर व्हिच टाइप ऑफ आर्किटेक्चर? सोलर वंश किस प्रकार की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था?
The correct answer is option A, Dravidian. Question number 20. Who was the founder of the Indian National Army? भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? The correct answer is option A, Mohan Singh. Question number 21. The first war of Indian independence took place in which year? भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? The correct answer is option B, 1857. Question number 22. Who was the last Mughal emperor of India? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? The correct answer is option D, Bahadur Shah II. Question number 23. Who was the first Indian to be elected to the British Parliament? ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? The correct answer is option B, Dadabhai Naoroji. Question number 24. The title Sher-e Punjab was given to which Indian leader? शेर-e पंजाब की उपाधि किस भारतीय नेता को दी गई थी? The correct answer is option D, Lala Lajpat Rai. Question number 25. Who was the founder of the Brahmini kingdom? ब्राह्मणी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? The correct answer is option A, Alauddin Rahman Shah. Question number 26. Who established the Servants of India Society? Servant of India Society की स्थापना किसने की? The correct answer is option D, Gopal Krishna Gokhale. Question number 27. Who wrote the book Discovery of India? Discovery of India पुस्तक किसने लिखी? The correct answer is option B, Jawaharlal Nehru. Question number 28. Who was the first Vice President of India? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? The correct answer is option C, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Question number 29. Who was the leader of the Bordoli Satyagraha? Bordoli Satyagraha के नेता कौन थे? The correct answer is option A, Sardar Patel. Question number 30. The third battle of Panipat was fought in which year? पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? The correct answer is option B, 1761. Question number 31. Who was the founder of the Mughal Empire in India? भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? Answer is option B, Babur. Question number 32. Who was the founder of the Arya Samaj? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? The correct answer is option C, Dayananda Saraswati. Question number 33. Who was the last ruler of the Vijayanagara Empire? विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? The correct answer is option A, Rama Raya. Question number 34. Which Indian king is referred to as the Lion of the Punjab? किस भारतीय राजा को पंजाब का शेर कहा जाता है? The correct answer is option D, Maharaja Ranjit Singh. Question number 35. Who was the first president of the Indian National Congress? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? The correct answer is option C, Umesh Chandra Banerjee. Question number 36. Which movement was started by Mahatma Gandhi against the Rowlatt Act? रोलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? The correct answer is option C, non-cooperation movement. Question number 37. Which act passed by the British led to the partition of Bengal in 1905? अंग्रेजों द्वारा पारित किस अधिनियम के कारण 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ? The correct answer is option B, Partition of Bengal Act 1905. Question number 38.
was the Prime Minister of India during the Indo-Pakistani War of 1971? 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? The correct answer is option A, Indira Gandhi. Question number 39. Who built the Red Fort in Delhi? दिल्ली में लाल किला किसने बनाया? The correct answer is option C, Shahjahan. Question number 40. Which freedom fighter is popularly known as नेताजी? किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकप्रिय रूप से नेताजी के नाम से जाना जाता है? The correct answer is option D, Subhash Chandra Bose.